Good morning, students. Today we will begin with an economics subject, and chapter 1 in economics is graph in economics. You must have done graph in your statistics subjects also last year, where using in various data you have drawn a different types of graph like pie chart, line diagram, या फिर clustered bar diagram, simple bar diagram. These are the types of diagram or the graph you have drawn last year. Now today in economics we will see how graph is useful in the study of economics. Let's begin with an introduction part. Introduction. Economic explain and analysis various economic event occurring in the real world. Real world में हमारे क्या हो रहा है, हमारी पॉपुलेशन कितनी है, हमारी ग्रोथ कितनी है, हमारी जीडीपी कितनी है, ये सब हमको पता चलता है विद इन इकोनॉमिक्स. An analysis of the statistic provided by the state, bank and international organization is very purposefully done in economic. What it has been said that जो भी analysis होता है, जैसे कि स्टेट, अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो ये स्टेट में पॉपुलेशन कितना है, ये स्टेट का ग्रोथ रेट कितना है, फीमेल मेल रेशियो कितनी है, लिटरेसी कितनी है. इफ़ आई टॉक अबाउट बैंक, विच बैंक इज़ अर्निंग मोर प्रॉफिट, विच बैंक इज़ अर्निंग इनटू द लॉसेस. और इफ़ आई टॉक अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वेयर वी स्टैंड, हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट कितनी है, हमारे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कितनी है, और वी कैन से पॉपुलेशन कितनी है, where we stand in population. All this we will come to know with the help of an data collected, okay, and it is very purposefully done in economic. Lay person do not get interested in discussions and analysis of event done by an expert. Lay person means a common person. कॉमन पर्सन को अगर हम बोले कि स्टैटिस्टिक डेटा कलेक्ट करके आप ग्राफ ड्रॉ करो या कुछ भी, दे विल नॉट एबल टू ड्रॉ इट, और दे मे बी नॉट इंटरेस्टेड इन डिस्कशंस ऑफ सच एनालिसिस, बट देयर अटेंशन इज टू ड्रॉ व्हेन important aspects of certain events matter pertaining to economic changes are presented by the way of picture. If I give you an example about population, census have started in the year 1951. 1950 years 51 से लेकर अब तक पॉपुलेशन हम एवरी 10 ईयर गिनते आए. 51 में इतना था, 61 में इतना था, 71 में इतना था, 81. अगर मैं सिर्फ बोलते जाऊँ तो इट विल बी एन मच कन्फ्यूजन्स फॉर यू. बट सेम इफ़ आई प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, अगर मैं ग्राफ पेपर में आपको ग्राफ ड्रॉ करके बता दूँ कि ये साल में हमारी पॉपुलेशन इतनी थी, ये साल में इंक्रीज़ हुई, ये साल में डिक्रीज़ हुई, तो इट बिकम मच ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो दैट इज़ वॉट इट हैज़ बीन सेड कि कोई भी डेटा आपने कलेक्ट किया हो, if it is presented in graph, it become much easier for people to understand it. Generally two types of pictures are used to depict such information, and these are called diagram and graph. Now diagram and graph I will go on explaining side by side because they are most similar, only minor changes are there. Meaning of diagram and graph. First one is diagram. Diagram is a representations of observable data by the way of picture. Okay, diagram is the representations of observable data by the way of picture. This is your first point, observable data by the way of picture. When it comes to graph also, a graph is also a representations of observable data by the way of picture. You have to make it in difference, you have to write it in difference between form. So first point ये आएगा कि it is an represent data or representations of observable data by the way of picture. Second says scales and measurement are used while drawing a diagram. We all know कि अगर हम कोई भी डायग्राम या ग्राफ ड्रॉ करते हैं, we do need a scale and measurement. Though thorough knowledge of statistic is not required to draw. Thorough knowledge of statistic is not required to draw. मतलब डायग्राम ड्रॉ करने के लिए thorough knowledge of statistic की रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं है. But when it come to graph, to draw a graph, thorough knowledge of statistic is required and statistical tool is also required. Third points of difference is a diagram is drawn for data which are presented in discrete frequency. Discrete frequency वाला point third है. A diagram is drawn for data which is presented in discrete frequency. What is discrete frequency? That I'll explain you when I'll turn the page. That is on page number 2. The examples are presented. Okay, so diagram is drawn for discrete frequency, while as graph is drawn for a continuous frequency distribution. Third point is graph is drawn for a continuous frequency distribution. In order to simplify such data, Then fourth point says, in other word, a diagram is drawn for self-explanatory data.
डायग्राम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. व्हाट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी? जैसे कि हमने लास्ट ईयर लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई किया, जहाँ पर आप अपनी मर्जी से लिखते थे कि प्राइस इतना होगा और डिमांड इतना होगा. लाइक इफ आई गिव यू एग्जांपल, प्राइस 1 2 3 4 5, तो आप डिमांड लिखते थे 5 4 3 2 1. ये क्या है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. मीन्स यू एड ऑन योर ओन डेटा एंड यू ड्रॉ अ डायग्राम. यस, बट when it comes to graph is not self explanatory. Yes, this is your fourth point. And lay person do not require detailed knowledge of statistic in order to draw and understand a diagram. Detailed knowledge is not required to understand diagram in a graph, but to understand a diagram, while as graph, a detailed knowledge of statistic is required to draw a graph. A diagram is, now this is the uses. This is your fifth point, uses. This is always asked in 2 marks question, that explain the uses of diagram. So a diagram is used by an advertisement company to draw attention. ड्रॉ अटेंशन मीन्स कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी बता देना कि हम हमारे प्रोडक्ट इतने साल से चल रहे, इतना सेल था, पहले हमने स्टार्टिंग किया, अभी बढ़ गया है. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ सेड. बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू स्प्रेड इन अवेयरनेस. सोशल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब कि NGOs एंड ऑल दैट. जस्ट टर्न योर पेज. Then it has been said, a graph is generally drawn on a graph paper and graph are used by researchers and educationalists. मतलब ये कॉमन, हमने पहले भी पढ़ा कि ग्राफ वो कॉमन पर्सन का काम नहीं है. अ ग्राफ इज़ ऑलवेज ड्रॉन बाय एंड रिसर्चर्स एंड एजुकेशनलिस्ट एंड ग्राफ आर यूज फॉर कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक. मतलब कि ले पर्सन, कॉमन पीपल को समझाने के लिए कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, हमारी फीमेल मेल रेशियोज़ कितनी है, हमारा लिटरेसी रेट कितना है, ये सब एक्सप्लेन करने के लिए अ ग्राफ इज़ यूजफुल सो दैट अ पीपल कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली. एंड इवन द नॉर्मल जो हमको एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेनर का भी टाइम बच जाए. Okay, then I have told you that example of discrete frequency is presented on page number 2. So here you will see that diagram is drawn for discrete, or it is also known as a discontinuous frequency. Here you will see discontinuous frequency 1 2 5 7 10. Price is presented in discrete frequency, while as on here you will see that continuous frequency. Continuous means 10,000 to 20,000 income class, 20,000 to 30,000, 50 to 1 lakh. ये continuous frequency है. Classes of marks is given 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39. तो ये सारे continuous frequency है. Okay, so this is an example of diagram and this is an example of graph. Okay, now in next class we will study importance of diagram and graph in economics. Till then, in your economics notebook you have to write down a difference between graph and diagram.